Hello everyone and welcome to Defense Shows. I KIRAN. So in today's class we will learn 10 new words with their meanings, synonyms, antonyms and after that a sentence formation. It is useful for all defense examination and competitive examination. So here we go. The first word is convalescence. See, convalescence एक verb है which means recovering from an illness or medical treatment. It is recovering from illness or medical treatment, right, is known as the convalescence situation, or we can simply say it is recuperate. See, recuperate is the synonym to the convalescence. Recuperate means recover from illness, right? It is recover from illness, same, right? And we simply can say it is regain, right? It is regain. Okay, so the opposite would be deteriorate, राइट कोई चीज़ क्या होना, डिक्रीज हो जाना. एंड सिनोनिम वुड बी रिकवर करना एंड इम्प्रूव होना. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. ही स्पेंट 8 months convalescing आफ्टर द स्ट्रोक. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज कैस्टिजेट. सी, कैस्टिजेट मीन्स होता है सीवियर पनिशमेंट. इट इज सीवियर पनिशमेंट. ओके, इट इज सीवियर पनिशमेंट. और वी कैन से it is like reprimed. Now what is reprimed? It is rebuke, and rebuke means express sharp disapproval or criticism. Simply you can say castigate means क्या होता है, criticism करना, ठीक है, because of behavior or action of someone is known as the castigate. All right, so next synonym of the castigate is admonish, right? Admonish मतलब होता है it is like warning someone or something, ठीक है, warn someone or something to be avoided is known as the admonish. So the antonym would be praise करना, ठीक है. इसमें क्या कर रहे थे, आलोचना, क्रिटिसाइज कर रहे थे कैस्टिगेट में. सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज करना. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. सी वाज कैस्टिगेटेड फॉर नॉट सीइंग अ गुड एग्जांपल. मीन्स सी वाज reprimand and rebuke and admonish for not seeing a good example. Alright, next word is thrive. सी, थ्राइव मतलब क्या होता है ना, कोई चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसे क्या होता है, फ्लोरिस बोलते हैं, राइट. मीन्स फ्लोरिस मतलब होता है डेवलप वेल और विगरसली, ठीक है. ग्रो और डेवलप वेल और विगरसली वी कैन से इट इज़ थ्राइव. हम बोलते हैं ना फेलियर ऑफ थ्राइव, मतलब द पर्सन कैन नॉट ग्रो, तो उसको क्या है, फेलियर ऑफ थ्राइव है, राइट. सो सिनोनिम वुड बी प्रॉस्पर करना, ठीक है, एंड बर्ग्यून. सी, बर्ग्यून मतलब होता है बिगेन टू ग्रो. जैसे बी है ना, उसका मतलब क्या होता है, बिगेन टू ग्रो, बिगेन टू ग्रो. ऑलराइट, सो ऑपोजिट वुड बी सिंपल है, डिक्लाइन हो जाना, ठीक है, घट जाना. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. एजुकेशन ग्रुप थ्राइव ऑन ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स एजुकेशन ग्रुप फ्लोरिश ऑन ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज मॉरी ब्यूंड. जहाँ भी ना मॉर्बिड वाली सिचुएशन आती है, वो चीज़ क्या है, किसी चीज़ की डाइंग से है, ठीक है, लाइक मॉरिब्यूंड. मॉरिब्यूंड मतलब क्या होता है, एक्सपायरिंग एट अ डेथ डोर, राइट, इज नोन एज द मॉरिब्यूंड. ऑल राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. इट इज़ लाइक एट द पॉइंट ऑफ डेथ, एट द पॉइंट ऑफ डेथ, राइट. सो इट इज़ एन एडजेक्टिव. सो ऑपोजिट वुड बी थ्राइविंग. थ्राइविंग आई टोल्ड यू क्या था, फ्लोरिश करना, कोई चीज़ बढ़ना, ठीक है. तो सिनोनिम वुड बी मॉरिब्यून का सिनोनिम क्या जाएगा, एक्सपायरिंग एंड अ डेथ डोर्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. ऑन एग्जामिनेशन सी वाज मॉरिब्यूंड एंड डिहाइड्रेटेड. मीन्स ऑन एग्जामिनेशन सी वाज डाइंग एंड डिहाइड्रेटेड. इट इज जस्ट अ सिचुएशन, राइट. सो नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉन्साइल. सी, रिकॉन्साइल मतलब होता है किसी चीज़ को रीस्टोर, फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन. रीस्टोर, रिकॉन्साइल मतलब क्या होता है, रीस्टोर फ्रेंडली, ठीक है, रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशन between is known as reconcile. Reconcile is a verb which means reunite. Alright, so the synonym would be pacify and appease. See, pacify मतलब होता है it is like bring peace to a country or any of the part, especially by the use of threat of military forces is known as pacify, ठीक है. So it is like you are getting some solution, right, is known as the reconcile, समाधान निकलना. All right, so the next synonym of the reconcile is appease.
सी अपीज मतलब होता है satisfy something, it is satisfy something. That is not exactly the synonym, but you can relate. Alright, so the opposite would be strange. Strange means you don't know the person longer, right? To be no longer on friendly terms with someone is known as the strange. Alright, now let's see the example. He sought my advice on how to reconcile the conflict. Means he took my advice on how to reunite, pacify the conflict. ठीक है. सो दी नेक्स्ट वर्ड इज ब्लंट. देखो ब्लंट स्पीच बोलते हैं ना, एनीथिंग विदाउट थिंकिंग यू आर स्पीकिंग टू समवन, ठीक है, इज नोन एज दी ब्लंट. इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव विच मीन्स फ्रेंकली, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लेन स्पोकन, राइट, नो बटरिंग, इज नोन एज दी ब्लंट स्पीकर, राइट. सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इट इज सबटिल. सी सबटिल मतलब क्या होता है ना, सो डेलिकेट और प्रिसाइज एज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब, राइट. इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसे बोलना कि इतने प्रिसाइसली बोलना और इतने डेलिकेट तरीके से बोलना कि अ पर्सन कैन नॉट एनालाइज और डिसाइड व्हाट यू आर सेइंग, राइट. डिप्लोमेटिक टाइप्स. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. व्हाट ही सेड वाज अ ब्लंट स्टेटमेंट और फैक्ट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेंट. देखो डेंट मतलब जो चीज़ होती है ना, उसका मतलब तो कोई चीज़ क्या है रही है, डिमिनिश हो रही है. डिमिनिश मतलब घटना, ठीक है. So synonym would be reduce होना है, lessen. I think it's simple one, right? So opposite would be increase, बढ़ जाना. Now let's see the example. This neither deterred him nor dented his enthusiasm. Right. So the next word is impoverous. ठीक है, impoverous मतलब होता है make a person an area poor. ठीक है, make an person or an area poor is known as the इम्पोवेरस. इम्पोवेरस मतलब क्या होता है कि कोई किसी चीज़ की स्ट्रेंथ कम हो जाना, और राइट, वीकेन हो जाना, इज नोन एज द इम्पोवेरस. नाउ लेट्स सी द सिनोनिम टू द इम्पोवेरस. इट इज़ वीकन, सैप एंड एग्जॉस्ट. हियर वीकन इज सिंपल, कमजोर हो जाना है. व्हाट डज सैप मीन? इट मीन्स ग्रेजुअली वीकन और डिस्ट्रॉय. व्हाट डज सैप मीन्स? इट इज ग्रेजुअली weaken, right, it is gradually weaken, धीरे धीरे वीक हो जाना. so the opposite would be strengthened, strength gain करना, ठीक है. so the word sentence would be the soil was impoverished by burning, means the soil was weakened by burning, right. next word is repudiate. see repudiate मतलब क्या होता है? it is like decline होना, ठीक है. repudiate मतलब क्या होता है? डिक्लाइन होना. ऑल राइट, रिजेक्ट करना, रिनाउंस करना इज द सिमिलर मीनिंग टू डे रिप्यूडिएट. ऑल राइट, सो द एंटोनिम वुड बी एम्ब्रेस करना. ओके, सो लेट्स सी दी what does renounce here means. it is like to give up. Renounce means to give up. Okay, renounce means to give up. I told you the similar meaning is renounce, reject, ठीक है. so ऑपोजिट वुड बी एम्ब्रेस करना. एम्ब्रेस मतलब कि होल्ड समवन क्लोजली और एक्सेप्ट समवन विलिंगली इज नोन एज द एम्ब्रेस करना. ऑल राइट, सो द सेंटेंस वुड बी सी हैड रिप्यूडिएटेड पॉलिसी एसोसिएटेड विद प्रीवियस पार्टी लीडर्स, राइट. इट मीन्स सी हैज़ rejected policy associated with previous party leaders. all right, next word is foul. Foul here means something related to smell, right, bad smelling. We say na foul smelling, it is like bad smelling. it is also an adjective which means disgusting. see, it is like disgusting. all right, so the synonym would be revolting, repellent and disgusting. okay, now understand the foul. it is like offensive to the sense, especially through having a disgusting smell or taste or being dirty is known as the foul. okay, so the synonym is revolting. revolting means क्या होता है? causing intense disgust और disgusting, similar meaning है. and repellent मतलब भी same होता है, causing disgust और distaste. ठीक है, एक नया word यहाँ क्या है इसके लिए? distaste. alright, so वैसे एक genuine meaning repellent का क्या होता है? able to repel a particular thing is known as the repellent. alright, so the opposite would be fragrant. it is fragrant. ठीक है, fragrant मतलब having a pleasant or sweet smell is known as the fragrant. all right, now let's see the example. a four odor troubled us all means a four smell troubled us all,
right? So here we have completed the 10 new words of today. Hope you like this session. If you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Jai Hind.